Well, hello, my kids. A very good evening to you all. And you might be wondering why I'm sitting in the gallery. It is just because I can get a feel that today we are going to learn something about the gardening. Okay, so this gardening is not a long procedure. It is a very small thing. It is very small procedure, I mean, and you will require very less quantity. So, हम gardening करेंगे with the use of the mustard seeds. Mustard seeds is rightly known as राई, जो मम्मी normally तड़के के लिए use करती है. Okay, the benefits of this mustard is I have mentioned it at the end of the video. You must definitely read it. Okay, so the purpose is why I am teaching you the gardening of mustard is the leaves of the mustard is also beneficial to our body. It is also equally nutritious as that of the mustard. Similarly, I've even mentioned about the benefits of the mustard leaves at the end of the video. You must definitely read it. Okay, so let us quickly learn about what all you require. Okay, so the first thing which I've took is, if you remember, while we made minions, I had told you not to dispose the upper part of the bottle. You remember? So आज हम gardening करेंगे इस छोटे से bottle के piece के साथ, upper part के साथ. Okay, and if you would have disposed it, you can use such glasses also if you have. Okay, so what is the first thing you're going to do is you are going to fill this bottle with the mud. So as you can see, I'm filling this bottle with the mud. This mud is nothing but the mud which you normally use for the gardening purpose. ठीक है, अगर आपके पास ये mud नहीं है, you can go to any we can say nursery nearby and आप ले भी सकते हो ये mud को. ठीक है. So what I did is, firstly I have filled this bottle with the mud. Okay, here I'm pressing it. Can you see this? Okay, so यहाँ पर गार्डनिंग में एक छोटा सा टिप यूज़ किया जाता है. Okay, now what is that tip is, जितना छोटा सीड, okay, उतना वो सीड एट द अपर लेयर में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सीड बहुत बड़ा है, इट शुड गो एट द बॉटम ऑफ द सॉइल. It should be inserted deep inside the soil. And अगर वो seed छोटा है, it should be at the topmost or you can say the upper layer of the soil. समझ में आया? So अपना ये जो मस्टर्ड है वो बहुत छोटा है साइज़ में, इसके लिए हम उसको कहाँ पर डालेंगे? ये सरफेस पे. करेक्ट. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम फिलिंग दिस बॉटल विद द सॉइल. 3/4 लेयर में सॉइल के साथ उसको मिक्स करूँगी. ठीक है, आई फिल दिस बॉटल विद द सॉइल. Trust me students, you're really going to love this. Okay, all right, can you see this 3/4 layer मैंने उसको soil से भर दिया है. Now what is the next step you're going to do is you're going to sprinkle some water on the soil in order to make it moist. You see this? What I'm doing it, I'm just sprinkling little bit of water ताकि वो जो मट्टी है वो थोड़ा सा wet रहे. अगर आपका मट्टी पहले से ही wet है तो you need not add the water, but here in my case the soil was little bit dry, so I have to add little bit of water in order to make it moist and soft. Okay, so now my soil is almost moist. Alright, now what I'm going to do is I have took mustard seeds. Can you see this? Yes. Now here mustards are very small in size. Okay, so आपको बहुत ही छोटा एकदम, और कैसे द क्वांटिटी शुड बी वेरी वेरी लेस, बिकॉज आपका ये जो ग्लास का जो टॉप है, द अपर पार्ट ऑफ द बॉटल इज़ वेरी स्मॉल. ओके, सो दैट इज़ वाई आप जो मस्टर्ड का सीड्स लोगे वो बहुत कम लोगे. ओके, वरना वो बहुत क्राउडेड हो जाएगा जब वो ग्रो हो जाएगा. तो सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू स्प्रिंकल द मस्टर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल. ओके, मेक श्योर कि आपका जो मस्टर्ड है वो इक्वली और वी कैन सी सरफेस पे बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड है. ओके, अभी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेट मी शो यू. कैन यू सी दिस? Can you see this? See how that mustards, right? Okay, so now what is the next step? Once you have put the mustard seeds on the surface, again you are going to cover these seeds with a thin layer of the soil, just इतना कि वो seeds थोड़े से ढक जाए. अगर आप बहुत ज़्यादा soil डालोगे और तो seeds बहुत अंदर धंस जाएगा and it will be very difficult for your small plants to come out. Okay, because as I said earlier, seeds बहुत छोटे हैं तो वो soil के surface पे होना चाहिए. ठीक है, so I have added little bit of soil over here. Okay, so what again I'm doing is
आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर इसके लिए ताकि वो सीड्स मॉइस्ट रहे. नाउ रिमेंबर, आपको एवरी मॉर्निंग आपको उठना है और ये सॉइल को इतना सा, जितना मैं देखो क्वांटिटी कितना ऐड कर रही हूँ, बस इतना सा पानी आपको उस पर स्प्रिंकल करते करते जाना है. ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपका सॉइल मॉइस्ट रहेगा एंड बहुत जल्दी वो सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे मतलब वो बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे. ठीक है, एंड देन यू हैव टू कीप इट इन द सनलाइट, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल, ओके, कि ये टॉपल ना हो जाए बिकॉज ये बहुत छोटा है ना, इसलिए. तो यू कैन मेक द हेल्प ऑफ सच ग्लास ताकि वो स्टिफ रहे. ठीक है, now I'd already done this procedure, so I'm going to show you how the plant will look like. Okay, so can you see this, how this mustards grew, right? So this is how your plant will look like, and I hope you will be reading the benefits of these leaves as well as the mustard seeds at the end of the video, and make sure that whatever tips I've told you regarding this gardening, you're following it, and all the best for this. Bye bye.